आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज अरुणाचल प्रदेश आनी मिझोरामांतल्या लोकांक तांच्या राज्यस्थापना दिसा निमतान परबीं दिल्यात। दोन्ही राज्यांनी सैमीक सोबीतकाय, गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी उद्देजक लोकांचो आशिर्वाद आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडियार केल्ल्या पोस्टान सांगलें। राष्ट्रीय उदरगती खातीर आपले उल्लेखनीय योगदान आनी वचनबद्धताय राखून ही राज्यां प्रेरणा दितात हें सांगून तांणी दोन्ही राज्यांतल्या लोकांक प्रगती आनी समृद्धी मेळची अशी इत्सा केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींत चालू आशिल्ल्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटाच्या फाटभुंयेर संवसारीक फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय चर्चा केली। प्रधानमंत्र्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन, अबुधाबीचे युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान, नेदरलँड्सचे प्रधानमंत्री डिक शूफ, स्वित्झर्लंडाचे अध्यक्ष गाय पारमेलिन आनी हेलेनिक रिपब्लिकाचे तांचे समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकिस हांचे कडेन उलोवप केलें। केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लींत ब्राझीलाचे कृषी मंत्री कार्लोस फावरो हांच्या वांगडा बसका घेतली। ह्या बसके वेळार ब्राझीलचे कृषी मंत्री आनी तांच्या पंगडा कडेन शेतीचेर उपेगी चर्चा केली। ICAR आनी ताचे ब्राझील समकक्ष जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य करतले अशें माध्यमां कडेन उलयतना शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। कृषि के क्षेत्र में ब्राजील के माननीय कृषि मंत्री जी से और उनकी टीम से यहाँ बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। एक हमारा ICAR और समकक्ष जो ब्राजील की संस्था है इम्ब्रापा, वो कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेगा, तो उसके साथ MOU करने पर हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है। ब्राजील की काफी रुचि है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। ब्राजील सहमत है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाने के लिए, उस पर भी हमारी व्यापक चर्चा हुई है। इससे दोनों देशों के संबंध निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होंगे, सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों की मित्रता दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। ब्राझीलान भारतांत एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली। अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाक 10 ते 15 दिसां भितर अणुकेंद्रीय कराराचेर अमेरिके कडेन कबलात करपाची शिटकावणी दिल्या। बोर्ड ऑफ पीसाच्या उक्तावण बसके उपरांत पत्रकारां कडेन संवाद साधतना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी अमेरिकेक कबलात करपाची इत्सा आसा अशें सांगलें। नवी दिल्लींत जाल्ल्या AI इम्पॅक्ट समिटान भारत आनी अमेरिके मदल्या पॅक सिलिका घोशणापत्र स्वाक्षरी सुवाळ्याक संबोधीत करतना गुगल आनी अल्फाबेटाचे CEO सुंदर पिचाई हांणी पॅक सिलिका सायनिंगांत भारत आनी अमेरिकेक जोडल्या बद्दल अभिमान आसा अशें सांगलें। समावेशी आनी परिवर्तनकारी AIचो फुडार घडोवपाक भारत अमेरिका भागीदारीची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें पिचाई हांणी नदरेक हाडलें। AIचो फायदो सगळ्यांक आनी सगळे वटेन मेळचो हे खातीर दोनूय राष्ट्रांनी एकठांय येवन वावरपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो। We must work together to ensure the benefits of AI are available to everyone and everywhere. The US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India like Google Pay are making products better for people all over the world. खेळ ICC T20 क्रिकेट विश्वचषकांत श्रीलंकेच्या पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमात जावपी निमण्या गट ब सर्तींत ऑस्ट्रेलिया आयज ओमाना आड खेळटलो। सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली। दोनूय पंगड सर्तींतल्यान पयलींच भायर पडल्या कारणान ही मॅच अर्थहीन थारता। ह्या गटांतल्यान झिम्बाब्वे आनी श्रीलंका हांणी सुपर 8 टप्प्यान सुवात मेळयल्या। फाल्यां कोलंबोच्या प्रेमदास आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमात न्यूझीलंड आनी पाकिस्तान हांचे मजगती सर्त सुरू जातली। हवामान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत केरळ आनी माहे हांगसर कांय सुवातींनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 3 दिसांत देशाच्या वायव्य आनी मध्य भागांत चडांत चड तापमान 3 ते 4 अंश सेल्सियस वाडूंक शकता। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर।